मेरे प्रिय छात्र भैया बहन, रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आपका अत्यंत स्वागत है। आज के समय में जब पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी से अत्यंत पीड़ित है, इस दशा में सबका जीवन रुक सा गया प्रतीत होता है। ऐसे में सत्य यही है कि जीवन कभी रुकता नहीं है और हमें रुकने देना भी नहीं है। रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज ने तय किया है कि हमारे छात्र भैया बहन भी ऑनलाइन स्टडी करेंगे। इसके लिए विद्यालय ने अभी अत्यंत सावधानीपूर्वक ऑनलाइन अध्ययन के लिए कुछ प्रयत्न किए हैं। उस प्रयत्न का परिणाम है कि हम ऑनलाइन आपको पढ़ाने के लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं। हर एक आचार्य अपने स्तर पर अपने विषय के लिए एकदम तैयार हैं और आपको प्रतिदिन ऑनलाइन लेक्चर्स देने के लिए तत्पर बैठे हैं। मैं मान सिंह यादव आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा और संबंधित एक्सरसाइजेस अर्थात क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अटेम्प्ट किए जाएंगे। अतः सबसे पहले मैं आप सभी से यह कहूँगा कि अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस या फिर जो बताए जा रहे निर्देश हैं उसको लिख सकेंगे, ताकि भविष्य में उसको रिवाइज करके अपनी कॉपियों पर लिख सकें। प्रिय बच्चों, नाउ आई शैल स्टार्ट माय टीचिंग। As you know, I am going to teach you English, and English subject has two parts. Basically, one is related to grammar and another is literature. Firstly, I shall try to tell you what are the contents in both of them. So far as literature is concerned, there are certain parts of it, like in literature there are 7 chapters of prose, 10 chapters of poetry, 4 chapters of short stories, and one long play, The Merchant of Venice. One more topic is there, that is known as figures of speech. These 5 topics are asked in literature part. 16 marks from prose, 14 marks from poetry, 8 marks from short stories, 8 marks from The Merchant of Venice, and 4 marks from the figures of speech. This is the criteria for the marking in the board examination. Now I think you had a general idea in your mind about your syllabus in literature, and basically how many marks do they carry with them as a topic, and which type of questions will be asked. I shall describe it, but later on when I shall start the text. In the second part, that is the grammar, I would like to introduce you the very general topics which are to be taught over here. In grammar, the first part as it is narration, second one is synthesis, third is transformation, and fourth is syntax. These are the basic grammatical parts which will be taught in your syllabus. Along with grammar, second part is composition. Under the topic of composition, there are two topics. One is essay writing, another is unseen passage.
these two topics will be asked in your examination, and only these two topics will be practiced with you. No letter writing will be asked over here. Vocabulary section contains with itself as antonyms, synonyms, homonyms, one word substitution, idioms and phrases, translation, these all the things. Now I think the whole grammatical section and literary section I have introduced it well, so that I could give you an idea what to study and how to study. This question is with me. I shall explain you over here on the channel, and each and every day you will receive lectures from this YouTube channel. So I urge you, I indicate to all of you to follow YouTube channel of your college, so that you could get each day a new and fresh study material. Thank you very much.